heavy major, whatever your understanding is going on. But what is need, what is want, what is desire, all these things we'll try to understand, and that we'll try to understand with the help of some applications like 50-30-20 rule. What is this rule? That we'll also try to see. So we'll going to delve into this rule. Thereafter, there might be some sutras, because in every span of our life we need to follow some guidelines. So what are the investment sutras? Thereafter, in our discussion, mutual fund aspects it will come. And last but not the least, as you understand that everywhere, of course, when I am calling it everywhere, you find some frauds elements might be there everywhere. धोखाधड़ी कहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन अकलमंदी का बात है, यदि इसका पहले हम धोखाधड़ को पहचान लेते हैं, तो ये धोखाधड़ हमको कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मेरे को नजर नहीं उठा सकता है यदि हम उनको पहले से पूछा इनको पहचान लेते हैं. So these are some of the aspects that we are going to discuss in our today's deliberations. See, let us start with money. As we understand from the perspective of economic terms that money is a matter of functions for a medium, a measure, a standard and a store. मतलब कुल मिला के पैसा चार कार्यों का मामला है: एक मध्यम, एक माप, एक मानक और एक भंडारण. वास्तव में पैसा हमारी क्रय शक्ति का स्रोत है, लेकिन वो आपूर्ति में दुर्लभ है. तो इसलिए विवेकपूर्ण तरीके से पैसे का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है. आइए देखते हैं what are the 6 pillars of financial literacy. So first we will try to see, or we will try to understand income, then it will come expenses. Thereafter we will look into the tracking and budgeting aspects, and in this course savings will come, and followed by investment, and also there is some aspects as you understand dates. So all these things we will try to understand dates also. So let us just proceed with one aspect. Of course, you understand it is a pillar one, that is income. Now, whatever the money that you are earning, maybe it is coming by way of your salary income, or maybe from your business income, maybe from your professional income, or maybe you are getting some interest from your fixed deposit, or it may come from in the form of dividend from shares, debentures, of course, interest, like that. It may also come from your some benefits, capital appreciation, whatever may be. But all this income, if you see, you can divide this into two segments. One is called active income, and the other is called passive income. So active income, that means सक्रिय है, and the passive income, it may be, you may call it निवेश से उत्पन्न आय को. So active income, it includes salary, professional fees, business income, and passive income, it includes maybe income from dividend, interest, rent. So while you are seeing that, हाँ, ओके ओके, ठीक है. तो so while you are while I'm giving the examples of salary, professional fees, dividend, so can you demarcate what the difference between active income and passive income? It is very easy. See, the income which you earn by just toiling, your perspiration, every day you are working for it, it is called as active income, like salary. So when you are getting salary, that means
You are going to office every day. Again, there you are working there. Okay, and from 10 to 5, 10 to 6, 9 to 6, whatever maybe, and after that you are getting your salary. So everything you every day you are putting hard effort, then you are getting your salary. And as the case may be, you may be a doctor, you may be an engineer, you may be a lawyer, chartered accountant. So you are getting your professional fees by putting your hard work, or also a business income. So this is coming under active income. But the passive income, the nomenclature, or you may say, what is the difference is, the difference is, in the case of passive income, you are not putting extra effort. Just you are sitting in your home, you are sitting in your house, and income keeps on coming to you, just like interest income. You have put your money, some money in banks in the form of fixed deposit, and every month bank is paying you interest. Likewise, you are getting dividend from any company. Just once, maybe uh, sometimes back, you have purchased some shares from a company, and after that it will coming on like that. Another thing you can understand, active income, there may be an end point, maybe at the age of 60, when you will come to your retirement age, your active income will come to a close, but your passive income, it will go on. Whatever the days, it will go on. So these are some of the difference between income. Now coming to the next is in expenditure. Expenditure, that means आपके खर्च. तो इसमें आप देखिएगा कि it is also can be divided into two segments. One is called कि अनिवार्य खर्च, अनिवार्य, which you cannot avoid. Also, you can call it mandatory or non-discretionary expenses. Another is called आपके इच्छा अनुसार खर्च. तो अनिवार्य खर्च में क्या होते हैं? खाना, घर, या आपका स्वास्थ्य के लिए, देखभाल, ये सब के लिए आपको जो खर्च होते हैं, दैट इज कॉल्ड अनिवार्य खर्च, बिकॉज यू कैनॉट अवॉइड. देन इच्छानुसार खर्च, यानी कि सेमी फॉर द पर्पस ऑफ सम entertainment, or you just go for some traveling, or maybe you want to make spend some money for luxury. So these are called all discretionary expenses, because it is depending upon your suitability. So let us understand about needs versus wants versus desires. Okay, so जैसा कि हम ये भी कह सकते हैं कि जरूरत बनाम चाहत बनाम इच्छा. तो ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड जरूरत, दैट इज मैंडेटरी. आपके जीवित रहने के लिए जो आवश्यक खर्चे हैं, ये जैसा कि भोजन वगैरह जो भी है. फिर आपके चाहत के लिए, चाहत आपको जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मदद करती है. और इच्छा, ये तो आपके कुछ भावनात्मक जो सुख देती है. तो ये सब कुछ आपको आते हैं, ये जरूरत, चाहत और इच्छा के. लेकिन समझदारी से प्राथमिकता तय करना सभी को आवश्यकता होती है. Now, let us understand about need versus want. Of course, you have understood. I guess you have already understood. Again, just for a recapitulation, these need versus wants, again we can divide into two parts, two segments. One is called urgent and important. Maybe something, it may be urgent, it may not be so important. It maybe something is important, it may not be urgent. So we need to classify all these things. Just take for an example what it has been shown over here. See, one shawl for Mr. Singh's mother. Let us assume Mr. Singh is a gentleman and his mother, of course, she is an old lady. Let us guess. So one shawl, whether it is required to be purchased for that shawl for mother, yes, it is very urgent, because it is, of course, it is very urgent because it is to be bought immediately, and also it is important.
Okay, because it may be winter season, so in the night it will be required, so it need to be purchased. Then suppose ki sahils cycle, somebody is going to school. For that, buying a cycle or using a cycle is very very important, that is required, we understand. But that is not urgent, because it may be deferred for some days, so you can plan for later, like that. Or now coming to the next is video game. It is neither urgent nor important, so you can guess it well, I think. Now the point over is budget. बजट, देखिए, अपने आय और व्यय के प्रबंधन में पहला कदम होते हैं बजट। अपनी आय और व्यय के सभी स्रोतों का आपको पहले एक सूची बनाना चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू जॉट डाउन वट एवर योर इनकम इज देयर, वट एवर एक्सपेंसेस दैट इज। और फिर अपनी आय से खर्च को घटाइए और देखिए आपके पास कितना पैसा बचा है। तो ये थोड़ा सा एक एक स्टेप होता है। और बात क्या है, वास्तव में आप अच्छा पैसा कमा रहे होंगे और फिर भी देखिएगा कि आपका दिवालियापन ये भी काफी भी आते हैं, सकते भी, ये भी आपको लिए आपको पता चलता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि पैसा को प्रबंधन कैसे किए जाए। तो यही बात होता है। तो ये सब कुछ आप जब देखते हैं, तो इसी का दौरान और भी एक चर्चा करना आ जाता है, दैट इज कॉल्ड 50-30-20 का नियम। ये बजट के दायरे में आते हैं। व्हेन यू आर डूइंग सम बजट, देन यू फाइंड दैट whatever it is suggested that 50% of your income that may be spent in just satisfying your needs, आपको जरूरतें को पूरा करने के लिए आप 50% पैसा खर्च कर सकते हैं। तो यही रूल कहते हैं, जैसा कि किराया में, या यू मे बी रिक्वायरिंग टू buy groceries, then you have to pay the bills, like that. So these are important, and also it is going to fulfill your needs. Thereafter, it may be uh, for your wants, आपको चाहत क्या होती है। यू मे बी गोइंग फॉर शॉपिंग, और मे बी चलो थोड़ा बाहर में खाना खा के आते हैं, तो ये सब कुछ चाहत में आती है। तो ये 30% तक कर सकते हैं। बाकी 20% ये तो आपको बचत करना चाहिए, बिकॉज ये भविष्य के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक बात देखिए, ये जो बचत करते हैं, तो ये आप बैंक में रख सकते हैं या एसआईपी में रख सकते हैं। सो इट इज योर अप टू अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। अच्छा, जब हम 50 को पहले बोला, बाद में 30 को बोला, बाद में 20 को बोला, तो इसका मतलब क्या बाद में 20% क्या रेसिडुअल है? ऐसा नहीं है। ये कहा जाता है ये 20 को पहले ही आप कर लीजिए। वट एवर योर इनकम इज देयर, पहले 20% को आप थोड़ा अलग करके रखिए सेविंग्स में। और यही होता है इंटरनेशनल रूल, जो बचत को पहले ही अलग कर देता है। बाकी जो 80% बचता है, उसी में से जरूरत चाहत जो भी है, मतलब कि वो पहले 20% को अलग कर देता है, और फिर बाकी 80% को वो कर देता है। सो हियर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, yeah, it has got some priority. First it will come 3, then your 1 and 2. Okay, so whatever we have discussed so far, can we go for some recapitulation by way of a test? If you agree, if you are just think that yes, you are ready to go for a test, you can go. Otherwise, I'm here. So first of all, I think you can remember whether salary is a form of active income or passive income. I think you can guess, because how you earn salary? By putting your active effort. So it is a active income, of course.
तो लाइकवाइज थैंक यू, किसी ने चैट में लिख भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। एनीबॉडी, टू न्यू मैसेज, या थैंक यू, वेरी गुड, वाह। Saloni Bhosle, many, many thanks. Now, again, let us come to another test. Just you can give one example of passive income. That income you do not have to put additional effort. First, sitting in your house, sitting in your drawing room, every month you are going to get, or after every interval. Okay, it may not be a month, it may be quarter, 6 monthly. Yeah. So passive income, do you remember? Yes, let me tell. Interest from your fixed deposit. I think you can remember. There also, of course, yes. Somebody has written. Very good. अरे वाह, सलोनी, वाह, डिविडेंड, रेंट, एक्सेलेंट, ब्यूटीफुल। हाँ, पंकज जी, पंकज सर, आपको धन्यवाद। तो बहुत अच्छा। सो लाइकवाइज rent is a discretionary expenses, non-discretionary expenses. That also you can guess, of course. And then now coming to another very important step, important discussion. Can you tell me the first step in managing your income and expenses is to create a quick. Anybody? Chat me. I think you can guess it. Budget. Okay. So likewise, of course, many, many thanks. You have participated in the quiz. Now, coming to the next is savings. So, as you understand, saving is something that you keep set aside some of your income in order to spend in the later period of time. Now, here with savings, another aspect that you need to understand, that is investing. ओके, तो एक को हम बचत कहते हैं और दूसरे को हम निवेश कहते हैं। आइए देखते हैं बचत और निवेश, इस दोनों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। हाँ, ओके ओके, चैट में आपने लिख दिया है बजटिंग, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो देखिए सेविंग्स, दिस विल फुलफिल योर शॉर्ट टर्म नीड, बिकॉज in savings you know that here the income generating capacity in saving is less, मतलब कि आप ज्यादा आपको फायदा नहीं मिल सकता। आप जानते हैं सेविंग्स में, बैंक में जब आप सेविंग्स में रखते हैं, हो सकता है कि आपको 3%, 2.75%, ज्यादा 4% ये मिल सकता है ना? तो ये 4% ज्यादा है या कम है? जस्ट लेट अस टेक ए गेस, आप बोलिए। हम्म, ठीक है, थैंक यू, ओके। सो जब सेविंग्स में आप पैसा रखते हैं, सो मे बी यू आर अर्निंग 3%, 4%, सो वेदर इट इज sufficient or not, of course, for in real term basis, of course you have to say on real term basis, that will discussion. And again, investment, in investment what you find that here benefit is more, but you need to put your money for a longer period of time, लंबे समय के लिए आपको एक प्लानिंग करने पड़ेगा, निवेश करके रखने पड़ेगा, so that will satisfy your investment रिक्वायरमेंट, क्योंकि कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट में उतना ज्यादा मतलब कि फायदा नहीं होते। ऑफ कोर्स कुछ तो कुछ होता ही है। ऑल दिस थिंग्स विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये जो 4% ये क्या मतलब कि सेटिस्फैक्टरी है? तो ये थोड़ा सा देखिए, हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा 1-2 स्लाइड के बाद। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का क्या रूल है? फर्स्ट यू नीड टू डू ए बजट, दैट इज ऑफ कोर्स सो फार यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। सेविंग इज आल्सो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मनीज वैल्यू। अच्छा, देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, वो आपने बहुत अच्छा है। सो विल सी टू इट। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, इट विल कम। So first what we are going to do is
Acha, so everybody, you are writing in the chat box, very nice. But I have to every time I have to see the chat box again. Some interruptions it may come. Thank you. Okay, so creating a budget is very very important that we understand. Okay, why? You see, by doing a budget, you can prioritize your expenses. देखिए, ऐसा भी जिंदगी में होता है, कुछ पैसा खर्च तो हो जाता है, फिर हम सोचते हैं अरे भाई इतना खर्चा नहीं भी करते तो कितना अच्छा हो जाता, थोड़ा पैसा तो बच जाता। ये जिंदगी में होता है। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर एक्सपेंसेस। कभी कभी घर में आप देखिएगा, पापा आपको बोलते हैं कि बेटा तुम तो स्कूल में आज जाओगे ना, तो चलो तुम मेरे साथ चलो। इसका मतलब कि पापा ये सोचते हैं कि आपका लिए जो पैसा रिक्शा फेयर या कार का जो किराया, ये पापा के साथ जाने से बच जाएगा। सो दैट इज ऑफ कोर्स जस्ट स्मॉल एग्जांपल। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर एक्सपेंसेस। फिर जो भी पैसा उतना जरूरत नहीं है, जो भी खर्चा उतना जरूरत नहीं है, उनको कर्टल कर दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपके बचत बढ़ जाएगा। देन व्हाट यू नीड टू डू, सेव फॉर इमरजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपात स्थिति, सब चाहते हैं कि सभी का जिंदगी एकदम स्मूथ चले, लेकिन आपात स्थिति कभी भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपात स्थिति को हम रोक सकते, आएगा, लेकिन उसके लिए प्रस्तुत रहना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो एवरीबॉडी एवरी टाइम वी नीड टू सेव फॉर इमरजेंसीज। अच्छा, इमरजेंसी के लिए कितना बचत करना चाहिए? सो देयर इज ऑल्सो वन रूल, दैट इज इफ यू put maybe 3 months 3 months income or 6 months, from 3 to 6 months income, यदि आप एक सेविंग्स में रखते हैं, तो ये लगता है कि आपका इमरजेंसी के लिए ये जो भी जरूरत है ये पूरा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद इंश्योरेंस का भी चर्चा आएगा। सो बाकी पैसा आप निवेश कीजिए। सो दैट इज द इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है। और जैसा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड, ये सब बहुत इधर का है, क्षेत्र है, वहां पे आप ये कर सकते हैं आपके। यस, तो ये इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो दैट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। So let us take a very practical view about savings versus investment. The very practical view, as you understand that savings can generate all around 4%, and if you invest, maybe just for an example, 500 rupees per month, maybe for a period of 5 years, 10 years, 20 years, somebody is putting the money in the savings account. So after 15 years, it will be it will fetch maybe 1,83,998 as the figure shows. But if that money would have invested in other areas like stock or whatever maybe asset classes are there, that could have generated investment of the rate of 12%, and over a period of 15 years it could have give you a benefit of 4,99,573.9. This is just an example. So you can understand difference between 1,84,000 and 5 lakh rupees. So this is the difference between savings and investment. Of course, when I'm telling to you, you have noticed that I have told you a longer period of time, that is 15 years. Okay, so that we have to bear in mind. Okay, so that is very very important. Now, before that, let us understand another thing, that is inflation. You understand inflation? Inflation that increases the price of the articles that you are buying every day. Maybe you may remember that
4 to 5 years back, when you are going to market with 100 rupees, you would have purchased 2 kilos of rice. But if you go to the same market with same 100 rupee note, you will be able to buy not more than 1.5 kg rice. This is an example you can understand. So here, why it is? Because of the negative impact of inflation, and that inflation, it is just increasing the price of the commodity, and at the same time it is decreasing the real value of money, and also it is also uh, pulling down the buying power of your money. So how to combat that? Yes, it is the power of compounding. Power of compounding, it allows you to earn interest on interest. Every time you are getting interest, that interest portion is added back to your principal, and with that principal, increased principal amount, you are going to get added interest in the next cycle. So as you understand, the number of cycles is increasing, you are getting more interest in the. So looking to that, eminent scientist Mr. Albert Einstein, once he said that compound interest is the eighth wonder of the world. Who understand the efficacy of it can gain out of it, and who do not understand can only end up by paying of it. So it was the saying of Mr. Albert Einstein. So like that, when you are coming to investment, you have to understand risk and reward matrix. What is that? See, when in the jargon of investment, or you may see in the world of investment, there are some products which are risky. Maybe it's a derivative market products like futures, options, or maybe cash market product like equity related products like that. These are somewhat risky, but the gain is you can also expect to get much more return here. Of course, there are some other products like fixed deposit in bank, post office savings, PPF. These products are less risky, but here the benefit is also less. Okay, so apart from this, if you find that somebody is telling to you that he has a product that can fetch much more income with lesser amount of risk, be aware of that it may be a fraudulent, because it is going deviated from your risk and reward matrix. So what risk and reward matrix it says? It is a just like a positive relationship, like more is the risk, much is the gain. Less is the risk, less is the gain. So this is the uh, risk and reward matrix. Okay. Now, so when you are investing in the capital market in the form of equity, you can buy shares, and thereby you can become owner of that company. Of course, you can also um, invest in fixed income like bond or mutual fund like that. Now, let us understand what is the market position that was prevailing in the last 40 years. So, one, of course, the inflation that was 6%, 6.7% on an average in the last 30 years. When I'm talking about average, that means every year it was not 6%. Sometimes it was less, sometimes it was more, but on an average 6.7%. But against that, silver, those persons who invested in silver, yes, those persons have generated at the rate of 8.51%. That is more than the what was the negative impact of inflation. Silver has given much more benefit than in comparison to inflation's negative impact. So going towards that, fixed deposit it gave 8.78%, then gold, then PPF, but equity ये तो कमाल कर दिया, 15.4%. You can understand, because again you have to see 30 years span of time, समय लंबे देने पड़ेगा तभी हो सकता है. So this is some of the beauty of this nature. Let us come to mutual fund.
Here in the mutual fund, you will be able to generate good return by putting your money in the mutual fund. It is managed by a fund manager, and this money is invested in the securities market. See, in all the mutual fund, there is riskometer. Like some mutual fund, you will find low risk, some mutual fund, moderate risk, high risk. So depending of one's risk appetite, risk profile, one can choose accordingly appropriate mutual fund schemes. So like that, there are different types of frauds are there, like phishing, vashing, ATM skimming. Of course, you know credit card fraud is it is now very much there. Of course, you have to be कुछ फ्रॉड के लिए थोड़ा सा एक आध तो बात कर लेते हैं। देखिए, फ्रॉड को ऐसा नहीं है कि फ्रॉड को कोई टहल नहीं सकता है, टल सकता है। यदि नजरअंदाज नहीं करते, थोड़ा सा कोई भी थोड़ा सीरियस हो जाता है ना, तो इट इज पॉसिबल। सपोज कि somebody you are going to deal in, अब किसी के साथ व्यापार करने जा रहा है सिक्योरिटीज मार्केट में, तो पहले ये देख लीजिए कि वो सेबी अप्रूव्ड है क्या, सेबी ने उनको मान्यता दी हुई नहीं दी हुआ। जो दिया है तो कब कर सकते हैं, निश्चित में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी नहीं होता है। लेकिन जो भी कोई आके बोला कि नहीं वो बहुत अच्छा है, तो देख लीजिए वो सेबी अप्रूव्ड है क्या। सेबी जिसको अप्रूवल देता है उसका जिम्मा भी सेबी लेता है, बिकॉज यू नो there is some IF fund is there, so there are some protection. Of course, you can find some protections there. Now, now we have come to a very important session. You see, it is a you can see one SEBI online portal is there. That this online portal it will help you to know many things about securities market. Along with you can see Sarthi app. This Sarthi app, it is a mobile application. It has been implemented by SEBI. You can download this mobile app and you can be able to know many things about securities market. Okay, जैसे कि आप देखिए सारथी ऐप में आपके केवाईसी प्रक्रिया, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, इसके बारे में भी काफी सुविधा दिया गया है। और ये एप्लीकेशन उन युवा निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने वित्तीय यात्रा में शुरुआत में है और उन्हें धोखाधड़ी से भी बचाता है। सो आफ्टर दैट you can see the visibility of NSE in the social media handling, like in the Facebook, Instagram, X handle, YouTube, so and so forth. So before concluding, there is a very eminent saying of NSE. What NSE they are saying that while you are coming to the market for the purpose of investment or whatever trading, whatever, of course, investment that we are emphasizing, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. So that is the buzzword while you are coming in the market, and also you are taking part in the market. So with this saying, I am concluding my today's deliberation, and thank you everybody. Now question answer session will begin. You can put your question, whatever we have discussed about securities market, about shares, debenture, whatever you. If you want to know something, you can write in the chat box, or you can open your audio. You can put me question. I'm here to give you answer. Thank you. Thank Your session thank you very starts much, now. sir. Yes, sir. ऑडियंस, इफ यू हैव एनी क्वेरी आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विजय कुमार जी को चाहूंगा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके इफ यू वांट से समथिंग सर, आप बोल सकते हैं। Good afternoon to all.
डॉक्टर विजय, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है सर। अ, किसी की कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर विजय, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज बोल सकते हैं। नहीं नहीं, वही बोलने वाला था कि अगर किसी को कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो अच्छा, पूछ Yes, सकते हैं। yes, yes. ठीक है सर। I think one question has come. Sir, we are getting query from Indrajit sir. How does one decide between short-term and long-term investment plans? हाँ sir, Indrajit sir, many thanks to you. Sir, it depends on your risk appetite, your risk profile. So depending on your risk appetite, आपके जोखिम सहनशीलता के ऊपर ही you can decide. Now the point is, of course, you can't call short-term deposits are like your fixed deposit in banks or maybe money market instruments. Long term, it is your investment in shares, debentures, ETF, like that. Now, how you can decide that is. So it also sometimes it may be saying that depending on your risk appetite and how you can decide according to your age. If someone is in a younger stage, maybe at the stage of 20, 25, 30, he may take much risky, much long term view. Of course he can take because he has got a longer period of time. But that when the person is going older, maybe at the age of 55, 50, 65, then he has to choose shorter period of deposits and of course less risky deposits. So these are some of the definition, but the point is you need to identify, you need to select your one according to your risk appetite. That is more important. Sir, some questions have come, but uh, हाँ सर, SIP सेफर देन अदर सिक्योरिटी। अच्छा, अमीना खातून ने अपने बोला है SIP सेफर देन अदर सिक्योरिटी। सी, SIP में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, उसका यूनिट खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड इट इज रन बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो मार्केट के बारे में इन लोगों को पता ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये पता यदि आपको भी नॉलेज ऐसा ही हो, एक मार्केट का मैनेजर का जैसा है, जैसा म्यूचुअल फंड का मैनेजर, या आपका भी जानकारी बहुत अच्छा है और यू कैन डिवोट मोर टाइम, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। बट यदि आप ऐसा चाहते हैं कि चलो आपके लिए दूसरा कोई काम कर देगा, कोई वेरी एक्सपर्ट पर्सन, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ठीक रहेगा। व्हिच बेटर ऑप्शन, न्यू इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड और इक्विटी ट्रेडिंग? अच्छा, ट्रेडिंग के बारे में आपको ये बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में तो यू आर इन्वेस्टिंग, जैसा कि ये किसका क्वेश्चन था, अशोक घरे जी, आपने का एक क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड या इक्विटी ट्रेडिंग। यस, देखिए म्यूचुअल फंड में यू आर इन्वेस्टिंग एंड इट मे बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ट्रेडिंग के लिए मतलब कि आपको तो व्यापार करना है, तो इसके लिए जानकारी भी बहुत ज्यादा चाहिए। ये तो बात सही है, एक बहुत जानकारी के साथ ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये आपको बोलेंगे, पहले निवेश का काम शुरू कीजिए, मार्केट को अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए, तभी आप आगे बढ़ने का आगे बढ़ते आइएगा। यही बात होता है। सो फर्स्ट यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, देयर यू कैन स्टार्ट योर इन ट्रेडिंग जर्नी। अच्छा, और क्या है सर? अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू पुष्पा रमेश जी, आपका धन्यवाद। हाउ डज वन डिसाइड बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? सर, आपको तो बता दिया है। अच्छा, हाउ टू नो इन्वेस्ट इन, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है। सालोनी भोसले आपने जी आपने बोला है, हाउ टू नो इन्वेस्ट इन विच कंपनी? एक्सेलेंट क्वेश्चन। सी, इस क्षेत्रों में ना एक बात होता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस मतलब निवेश के लिए
आवश्यक समय और सक्रिय निगाह है। मतलब कि यू हैव टू गो फॉर इन डेप्थ स्टडी। उस कंपनी को बारे में जानना है कि जो कंपनी को शेयर आप खरीदने चाहते हैं, उस कंपनी का व्हाट इज द फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट कंपनी। पहले देखिए उस कंपनी का इनकम पोजीशन, उनका रेवेन्यू पोजीशन, फिर उनका लाइबिलिटी। तो ये सब कुछ आप एक कंपैरिजन के साथ, मतलब कि लास्ट ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या था, यदि आप इनका प्रॉफिट के बारे में देख रहा है या इनका रेवेन्यू के बारे में देख रहा है, देखिए कि इनको बढ़ने का रफ्तार कितना है, परसेंटेज ग्रोथ। और ये भी देखिए कि आगे में उनका क्या उम्मीद है। ओके है ना। उनको प्रोडक्ट के बारे में देखिए, मार्केट में इन प्रोडक्ट कैसे चल रहा है। तो ये सब के बारे में जब आप एक अच्छा से एक मतलब कि निश्चय कर लेते हैं, तो ये आपके लिए सुविधा हो जाता है। फिर देखिए उनका लाइबिलिटीज का क्या बात है। यदि लोन ज्यादा है तो दैट इज अ just impact on the asset. That is also you need to see. Then what is the plan for that company for repayment of the loan or liabilities, whether the company is contemplating to take another loan in order to repay the earlier one, or whether the company is trying to use its internally generated cash flow। आप जानते हैं, क्योंकि आप कॉमर्स का स्टूडेंट, आप जानते हैं कैश फ्लो के बारे में भी। तो ये सब भी की हाँ, तो ये सब देखिएगा तो उसमें चलेगा। ठीक है। थैंक ठीक यू। है, हाँ due to सर। time constraints, sir, we have to end this session. या Thanks a lot, audience, for joining us. Uh, we'll surely try to schedule more sessions in the coming months. Thanks a lot, everyone. Thank you, sir, for your valuable insights. थैंक We'll यू be सर। ending this session. या Thanks a lot, everyone. थैंक यू एवरीवन।